Welcome to Sambhashana. I'm so glad to be back in this new year with some amazing and inspiring conversations with this brand new series called The Change Makers. We would be talking to people who have taken the road less traveled in the development sector with a determination and grit to contribute to the development of the society in whatever form they could. Without any further ado, I'm glad to present the first change maker of the series, Mr. Vikas Kumar, along with his wife, have been silently working for the betterment of the children in the Naxal-affected village called Laxmipur in Bihar, which is completely surrounded by forests from across all the sites. Through his NGO, Pahal Ek Nayi Soch, Vikas works with over 320 underprivileged children, providing education and food. And he also works in the areas such as women's health, providing medical supplies and dry rations for families with the help received from Pan India. Vijay did his hospitality management from IH in Lucknow, and then he worked in a hotel for 3 years, which is where his development work stemmed out by befriending a rag picker. Vijayji, welcome to Sambhashana. Thank you for being my first guest on this show, that is Change Makers, to share your amazing journey and the story. Thank you, ma'am. Let us take a look at some of the interesting work that Vijay and his team has been doing far, far away in a small village, which is surrounded by forest. आपने बताया कि you met a rag picker and that's how your development work has started. Can you share that? This is an amazing story. Can you share how this all began and where it started? Yes, actually, it's a whole organized development sector in my life. It's come from the rag picker. क्योंकि जब मैं दिल्ली में था तो बहुत चकाचौंध वाली जिंदगी में था मैं. It's all lighting, luxuries, hotels, food, wine, lots of luxury guests. But when I outside the restaurant hotel in the 12 o'clock in midnight or 1 o'clock, some of that 5 or 6 kids, like the 6 to 8, 10 year, they are searching something in the dustbin. I'm asking, what are you searching? They're asking, I am searching the plastic and some wastage who have throughout their home. Okay, and where you sold out? They are saying we are sold out in the near about our vendor. Okay, what is your labor cost? They are saying कि when I collect the one big bucket, like एक बड़ा बोरा अगर हम भर पाएंगे तो मुझे 2 टाइम का खाना मिलेगा और 100 रुपया एक दिन का मिलेगा. मैंने कहा ठीक है. तो that's a normal usually day. बस मैं रोज वहां से गुजरता था, मैं रोज उनको देखता था. तो मेरी बातें, मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं कभी रेस्टोरेंट से कुछ लेके आता था पैकेट में, कुछ भी एलिमेंट्स लेके आया, कुछ भी लेके आया, या फिर कभी रोटी बच गई रेस्टोरेंट में तो मैं मैनेजर से बोलता था कि सर ये खाना तो लेफ्ट ओवर है तो मैं इसको ले जा सकता हूँ. बोला ठीक है, विकास ले जा सकते हो. तो मैं उनको देने लगा. धीरे धीरे ये जो मुलाकात थी वो दोस्ती में बदलनी शुरू हो गई. तो फिर मैं जानकारी शुरू की कि तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या नाम है. तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके यहाँ पेरेंट्स यहाँ कोई रहते ही नहीं है. मैंने कहा 10 साल का बच्चा इज 10 year old, how live alone? बस हम लोग अकेले रहते हैं. और मैंने कहा तुम रहते कहाँ भाई? बोला we are situated near about the railway line. In the from the my home 1 to 1.5 kilometer. तो one day when I off, मैं उनके पास गया. मैं 10 बजे गया तो उनका ठेकेदार बोला कि सर वो तो सब गए कूड़ा चुनने के लिए, वो अलग टाइम में आएंगे, 2 बजे आएंगे. फिर मैं 2 बजे फिर गया. तो फिर मैं वहां जाके देखा तो मैंने कहा पूछा भाई तुम लोग क्या हाल चाल है, नहीं हाल है. बच्चे सारे खुश हो गए. तो मैं देखा कि ऐसे ही गंदी नाली बगल में चल रही है. जनरली कौन सा एरिया दिल्ली में? ये लोधी गार्डन के पास का एरिया था, लोधी कॉलोनी के पास का एरिया था वो. तो वहां पे था. तो मैंने कहा कि ठीक है. तो मैंने ठेकेदार पूछा भैया इनका खाना पीना क्या? बोला कि सब्जी चावल खाते हैं, बस एक टाइम खाना इनको देते हैं, अगर ये बोरा भर के पूरा लाएंगे तो. मैंने पूछा, मैं देख रहा ऐसे गंदे वंदे पड़े. मैंने कहा ठीक है चलो
थैंक यू वेरी मच, मिलकर अच्छा लगा। फिर मैं अपने होटल में गया, बात किया कि ऐसे ऐसे बात है सर, तो हम चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर इनको सपोर्ट करें। तो एक दो मैनेजर्स थे, मैंने कहा कि यार इतने तो सिगरेट पी जाते हो आप, अगर आप डेली एक डब्बा सिगरेट पीते हो, क्योंकि होटल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं लोग। मैंने कहा यार 300-500 का सिगरेट पी जाते हो आप, तो आपके 500-1000 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इनको, बट हाँ इनको फर्क पड़ जाएगा। तो फिर मैं क्या किया, अगले दिन कुछ सामान खरीदा, लाइक साबुन खरीदा, टूथपेस्ट खरीदा, ब्रश खरीदा, केला खरीदा कुछ। मैंने कहा कि जब तक इनको कुछ लालच नहीं दिया जाएगा वो आएंगे नहीं मेरे पास। तो फिर उनके पास गया, मैंने कहा कि देखो तुम लोग पहले साफ सुथरा हो, पढ़ाई तो बाद में करेंगे, पहले बेसिक हाइजीन और क्लीननेस पे काम करना शुरू किया हम लोग। तो फिर उनको हम रोज जाते, अपने से ब्रश करवाते, जिसके पास ब्रश भी होता उसको देते, जिसके पास नहीं होता उसको देते। इस तरह से 1 महीना तक चला हाइजीन का काम। तो जब लगा कि नहीं अब ये लोग नहाने धोने ठीक से लगे। आप अकेले थे ये हाँ जो मैं काम कर अकेले रहे लंच, थे? हाँ मैं अकेले काम करते हुए, जब मेरा ब्रेक ब्रेक होता था 3 घंटे का हम लोग का ब्रेक होता है, जब फाइन डाइन रेस्टोरेंट जनरली 3 to 6 क्लोज होती है, तो उस टाइम मुझे छुट्टी मिलती, तो मैं एक झोला रखता था, एक झोला में करके सामान ले गया, 2 घंटों में बिताया, फिर लौट के अपना रेस्टोरेंट आ गया। तो लगा कि नहीं अब इनके साथ एजुकेशन पे काम करना चाहिए। तो फिर मैंने कुछ स्लेट खरीदा और कुछ बेसिक हिंदी और इंग्लिश की बुक खरीदी। फिर मैं उनको 1 घंटा पढ़ाना शुरू किया। ऐसे करते-करते 6 महीना हो गया। मैंने कहा यार, मैं फिर और जानकारी अच्छी मिली कि ये आए कहाँ से, ये कौन है, ये पैसा कैसे आया इनके पास, ये यहाँ पहुँचे कैसे। तो इस इतिहास ये था इनका, इनका स्टोरी ये है कि जो ठेकेदार होते हैं वो इनको गाँव में इनके पेरेंट्स को 10,000 रुपए दे देते हैं और बोलते हैं अपने बच्चे को दे दो, 2 महीने ये मेरे साथ काम करेगा, तुम्हारा 10,000 रुपया वसूल हो जाएगा। ओके, ओके, सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट था कॉन्ट्रैक्ट। इनके पास। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो मुझे लगा कि ये सारे लोग बिहार है, यूपी से हैं, बंगाल से हैं, तो मुझे लगा कि प्रॉब्लम दिल्ली में नहीं है, प्रॉब्लम बिहार में है। अच्छा, अब अच्छा। जो भी लोग काम कर रहे हैं, होम्स पे काम कर रहे हैं, या फिर जो भी रेड पे काम कर रहे हैं, तो इनको अगर वहीं पे होम्स बना के, जो बड़े स्टेशन है जैसे पटना है, मुजफ्फरपुर है, बरौनी है, जहाँ से कि मतलब बहुत सारे लोग माइग्रेट करते हैं, तो ठीक है पेरेंट्स माइग्रेट करते हैं, करने दें, बट क्या उनके बच्चों को हम यहीं पे होम्स बना के रख सके। तो मैं इस दरमियान मेरी बात शुरू हुई, होम्स में जाके देखना हमें शुरू किया कि भाई कौन कौन से होम्स जो दिल्ली में काम कर रहे हैं इन बच्चों के साथ। तो जब मैं होम से मिला तो वो बोले कि विकास जी देखिए ऐसा है कि फंडिंग जो है यहाँ पे है, बिहार में फंडिंग नहीं होगी। मैंने कहा फंडिंग यहाँ पे है लेकिन जरूरत तो बिहार में है। डेफिनेटली। हाँ। हाँ। तो फिर मैं कहा कि अगर मैं शुरू करता हूँ तो क्या होगा, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन था कि मैं गाँव में ही शुरू करूँ, मैं अपने ही गाँव से क्यों ना शुरू करूँ। आप भी बिहार से हैं? मैं बिहार, मेरा होम टाउन यही है। ओके, ओके, तो ओके। ऐसे ये कहानी शुरू हुई थी। और थैंक यू सो मच विकास जी, आपने जो ये स्टोरी बताया, इट्स वेरी हार्टनिंग टू a person from somewhere, figuring out there is a problem and going back to his village and then contributing. It's something very inspiring. थैंक यू। And also you said that your village is surrounded, by forest across all sides, and it's a यस। Naxal affected area. यस। When you figured out these were the problems, other than this, what are the kind of underlying problems that you figure out that you can solve in Bihar, apart from the children going and working somewhere else and no education? Is there anything else that you figured out was the major problem that you wanted to solve for your village? Yes, we just create a leader, edu leader in our local community youth. This time in the rural area, unemployment is a very vast issues. तो मुझे लगा कि यहाँ पर लोग इतने अनएम्प्लॉय हैं कि कैसे क्या किया जाए। तो मैंने कहा कि मुझे भी कुछ करना है, तो मैं अकेले कर नहीं कर सकता हूँ। तो क्यों ना मैं जो एजुकेशन, जो लोकल्स लीडर है, खास करके जो गर्ल्स है, जो बॉयज है, जो 12th पास कर चुके हैं, जो अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुके हैं, क्यों ना उनको ट्रेन किया जाए एजुकेशन लीडर के रूप में, जिससे कि एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो और इनसे लर्निंग सेंटर जो हमारा है ये पढ़ाने का काम भी कर सकते हैं। तो 2 चीजें हो जाएगी, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और दूसरा इनका सोशल वर्क भी होगा, जिससे कि बच्चे पढ़ पाएंगे। तो ये हमारा बेसिक था। दूसरा ये था कि इन्वायरमेंट इशू हर स्टेट में, हर ब्लॉक में, हर गांव में है, तो बिल्कुल अवेयरनेस ही नहीं है, उनको अवेयरनेस ही नहीं है। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, पहले हम लोग इन्वायरमेंट अवेयरनेस, मतलब कि स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। तो इस तरह से कामों से शुरू किया। तो ये हमारा अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन ये था हमारे साथ। Wow, that's nice. And
Definitely, आपने when you say development work, when you say an NGO or any kind of social work, you would have had a lot of challenges because Yes. going and doing something like what to do at the grassroots level is not very easy. But would you share some of the challenges that you are facing currently, or what you have faced in the past? Yes. In the past, when I was start my journey, I am facing challenges from my home Oh, okay, because okay, I am working with the untouchable community. The Musahar okay, in the whole over India, they call the untouchable community. When you touch their community, you have to bath. You okay. cannot eat or drink anything from their home. तो जब मैं इन Yeah, कम्युनिटी के साथ काम शुरू किया तो सबसे पहले चैलेंज मुझे अपने गांव में अपने आसपास के लोगों से मिलना शुरू हुआ कि the तुम भाई, cultural कल्चरल, problem that. बोला कि भाई Hmm, तुम इतनी बढ़िया डिग्री करके होटल मैनेजमेंट करके जॉब करके छोड़ के यहाँ आके काम कर रहे हो, मतलब यू आर गोइंग टू मैड, मतलब क्या मिलने वाला तुमको इससे? ये इनकी लाइफ है, इसे जीने दे, तुमको अपनी लाइफ जीना, यू हैव टू गो टू एंड जॉइन योर अगेन होटल मैनेजमेंट एंड गो टू अब्रॉड अर्न मोर मनी. तो आई से hmm, कि व्हाट इज द रोल ऑफ द मोर मनी? सेटिस्फेक्शन. hmm, Why you purchase the AC? Why you purchase the food? For satisfaction. And I am not hmm, satisfied. My hmm, satisfaction is that kids should also learn and should also parallel in our society. Whenever they are getting the vote, they have to know कि what are the wrong and what is the right. absolutely. तो एक तो प्रॉब्लम वहां शुरू हुई, तो मुझे घर वालों ने, मतलब गांव वालों ने बोला कि यार इसका दिमाग खराब हो गया है और कुछ नहीं हुआ है, इसका Uh-huh. दिमाग खराब हो गया है. तो Hmm, वहां से जब निकले हम, तो अभी क्योंकि तो जिन कम्युनिटी से हम काम करने वाले कर रहे हैं, उनके पास एजुकेशन के नाम पे कुछ है ही नहीं उनके साथ, hmm, और उनको आज तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज कुछ भी नहीं मिलती, जबकि सबसे ज्यादा पॉलिसीज उनके लिए बनती है बट उन तक पहुंचती नहीं है. तो उनको लगता है कि हमारे पास जो भी लोग आ रहे हैं वो हमें चीट करने आ रहे हैं. तो जब मैं उनके पास hmm, गया तो उनको लगा कि सर भी चीट करने आए, सरकारी आदमी है, अपना बाबू साहब आएंगे, hmm, खाता भाई hmm, भरेंगे, अपना ऑल वेस्टर्न फील्ड एंड देयर गो. तो एक hmm, साल तो मुझे ये संघर्ष करने में लग गया, उनको ट्रस्ट क्रिएट करने में लग गया कि भाई मैं जो आया हूँ आपके लिए आया हूँ, मैं किसी hmm, सरकार की तरफ से hmm, नहीं आया हूँ, मेरी सैलरी कहीं hmm, से नहीं बनती है. एंड आई hmm, यूज्ड माय बास्किल दैट टाइम. uh, एंड जनरली मैं उस टाइम लंच में मेरा मिड डे मील होता था, uh, uh, स्कूल में जो मिड डे मील होता था मैं वही खाता था, क्योंकि दैट टाइम आई uh, हैड नो मनी. hmm, hmm, कोई hmm, जॉब नहीं थी मेरे पास, कोई मनी नहीं थी, तो uh, सर्वाइवल करना बड़ा मुश्किल हो रहा था उस समय मेरे लिए. तो एक तो hmm, सर्वाइवल hmm, मुश्किल था, दूसरा कि फैमिली में सपोर्ट नहीं था, तीसरा hmm, था कि जिन कम्युनिटी के लिए हम काम करने जा रहे थे वो ट्रस्ट नहीं दिखा पा रही थी. hmm, उसके बाद हुआ कि अकेले इतना लोग कैसे करें, फिर मैं यूथ को कन्विंस करना शुरू किया, तो बोल रहे हैं कि सर आपके पास तो ऑलरेडी फंड नहीं है, तो आप मुझे कैसे पैसा दीजिएगा. hmm, फिर उनको ट्रेनिंग कैसे दिया जाए. और अभी मैं जो फेस कर रहा हूँ, फंडिंग प्रॉब्लम है, ट्रेनिंग प्रॉब्लम है, जो यूथ को ट्रेन करे, मेंटरशिप प्रॉब्लम है, क्योंकि सीएसआर आपके शहरों में है, hmm, एंड आपके एचएनआई भी शहरों में है, बट hmm, रूरल एरिया में, खास करके बिहार में, जैसे कि ब्रांड बना हुआ है कि वहाँ पे सब लोग चोरी बैठे हुए हैं, वो आपके पैसे को लूट लेंगे, खा लेंगे. तो ना एचएनआई hmm, इंटरेस्ट करते हैं यहाँ पे, ना सीएसआर यहाँ पे है, और गवर्नमेंट की तो बात ही अलग है, वो तो अपने हिसाब से अपना उनका अपना फाइल चलता है. तो ऐसे hmm, प्रॉब्लम को हम आज भी फेस कर रहे हैं, इसीलिए हमारी संस्था बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रही है. अगर आप 6 साल में मेट्रो सिटी की संस्था को देखेंगे तो उनकी hmm, एनुअल टर्नओवर करोड़ों से ऊपर होती है. हमारी hmm, संस्था एनुअल टर्नओवर 5 लाख की है ओनली. तो hmm, ये है. बट हाँ, मेरा जो चेंज है, जो बदलाव ग्रास रूट लेवल पे, वो सॉलिड है. hmm, मैं hmm. इतना काम अगर दिल्ली में कर रहा होता तो मैं आज कहीं और होता. You'll be lost in the amount of NGOs which is cluttered in Delhi. Yes. If I Hmm. was working in the metro city, any metro city, I have to big name, big fame. When you do effort little more in the metro city, na, they present media and all things big more. But when you Yes. lots of work in the rural India, Mhm. they are not finding you, because there are lots of working there. Why are finding the grassroots level? They are not Yes. going to see what they are doing. Nobody, सब लोग नीलिमा जी इंसान नहीं होती हैं कि चलो भाई गांव में देखें क्या हो रहा है. उनको लगता है कि यार गांव में ऐसे ही ठग रहे होंगे, ऐसे फोटो भेज देते होंगे खाली. तो ये है हाँ. Right, I know. And आप शुरू किए बच्चों के साथ and creating education leaders. इसका impact अब क्या दिख रहा है? आपको क्या लग रहा है? Can you ड्रेस्टिक इम्पैक्ट see? मुझे. Uh-huh. मेरे पास जो मैं अगर डेटा की बात नहीं करूं, मैं नॉर्मल बात करूं, डेटा में है कि हमारे पास अभी तक हम लोगों ने 400 बच्चों हम का डेटा एनरोलमेंट के बारे में नहीं जी, क्योंकि from my point of view, when I'm talking
impact, I'm not looking at numbers or anything, because at the end of the day, it is personally what you have seen, at the down, what are the changes that you have seen, even if it's one kid, has been impacted. Impacted in the more than 500 kids. First was the basic Okay. hygiene and cleanliness. Our Yeah. main focus is to create the basic hygiene and cleanliness, because that's why they are called the unprivileged community. इतने गंदे Yeah. तरीके से ये लोग रहते हैं ना, ये मतलब आप उनको छू नहीं सकते हो. तो मैंने कहा नहीं, पहले इनके बेसिक हाइजीन पे काम करो, और डेली बेसिस पे, Yeah. डेली उनको साबुन दो, कंघी दो, नाखून काटो, डेली चेक करो. मैंने अपने वॉलंटियर्स फेलोज को बोल दिया, स्ट्रिक्टली बोल दिया कि जो लड़का साफ सुथरा नहीं आएगा वो या तो नहीं पढ़ेगा, या तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स को बुलाइए, जैसे करना करिए. तो पिछले 6 साल में हम लोगों ने जिस कम्युनिटी के साथ काम करना शुरू किया था, वो कम्युनिटी अब बेसिक नीट क्लीन आती है बच्चे पढ़ने. एक तो ये हो गया. इनके माँ बाप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं आप इन सब को अब देख के? अब क्योंकि उस टाइम इनको लगता था कि हमें कोई देखने वाला नहीं, हमसे कोई मिलने वाला नहीं है, हम अगर नहा के भी कहाँ जाएं, साबुन लगा के कहाँ जाएं हम. अब इनको लगता है कि नहीं, साबुन लगाने से ये हो रहा है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो हमसे बात कर पा रहे हैं, हम कहीं जाते हैं तो हमारी रिस्पेक्ट बढ़ रही है. तो ये उनको चेंजेस लग रहा है कि नहीं, बाल धोना जरूरी है, मतलब पाउडर लगाना भी जरूरी है. ये करने से हमारा जो है ना एक वैल्यू बढ़ रहा है. और मेरा मकसद ये है कि एजुकेशन है तो मतलब कि आपके रहन सहन से दिखना चाहिए. दूसरा ये है कि जो पेरेंट्स बिल्कुल भी एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, जिनको कि बिल्कुल से अक्षर ज्ञान भी नहीं था, क ख भी नहीं आता था, आज वो बच्चे नाच के कविता पढ़ते हैं, गा के कविता पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, अपने बारे में बताते हैं, अपने गांव के बारे में बताते हैं. कल ही मैं मकर संक्रांति पे हमारे यहाँ कल ही था, तो मैं पेरेंट्स से बात कर रहा था. तो मैं पेरेंट्स ऐसे, जैसे आपने पूछा ना, मैंने पूछा कि आपका जो बच्चा यहाँ पढ़ने आ रहा है, 6 साल का बच्चा था, आज से 1 साल पहले और आज में आपको क्या बदलाव लग रहा है? तो बोले सर, पहले सर मैं ब्रश वश भी नहीं करता था सर, ये नहाता वाता भी नहीं था, ऐसे गंदे रहता था, आज सर पूरा ब्रश वश करके आता है. तो मुझे लगा कि ये बड़ी अचीवमेंट मेरी, क्योंकि वो पेरेंट्स को एजुकेशन के बारे में ज्यादा पता नहीं है. वो खुद ही पहली बार स्कूल गए हैं, उनके बच्चे पहली बार स्कूल जा रहे हैं. तो मैंने कहा कि एजुकेशन के बारे में इनसे पूछना मतलब इनके ऊपर कुछ कमेंट करना होगा. मैं इनके बेसिक हाइजीन के बारे में पूछता हूँ कि बेसिक हाइजीन में, या फिर जो आम भाषा में गाली देते हैं, जनरली ये कम्युनिटी क्या होता है कि आपके बच्चे भी गाली देना शुरू कर देते हैं. तो ये अब एकदम बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं अब, और पूरा साफ सुथरा रहते हैं. तो ये हो गया. दूसरा क्या कि हम लोग आदिवासी कम्युनिटी के साथ जब काम करना शुरू किया 2017 में, तो करीबन 30 बच्चे ऐसे थे जो सोनफिक्स जानते होंगे आप, सोनफिक्स थिनर. No, sorry, no. ये एक एडिक्शन है, ड्रग, नशा है, केमिकल नशा है. Okay. हाँ. तो ये सारे 30 बच्चे करीबन उससे एडिक्टेड हो गए थे. तो इनके पेरेंट्स ने कहा कि सर मेरे बच्चे को बचा पाइएगा तो बचा दीजिए, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं. और ये बच्चे मात्र 6 साल से 10 साल के बच्चे थे. तो फिर हम लोगों ने उनको रेस्क्यू किया, उनको एक हॉस्टल में रखा, एक स्कूल में 6 महीने तक कंटिन्यू गार्डिंग किया. और आज बच्चे वो बीड़ी भी नहीं पीते हैं. जो बच्चा कि दिन भर नशा में धुत रहता था, वो आज बीड़ी भी नहीं पीता है, और आज सीखता है, समझता है. जब उनके साथ काम करना शुरू, उनको तो 1 साल उनको पता नहीं चला हम हैं कहाँ. हमारे फेलो बोलते थे कि सर क्या पढ़ा है सर, इनको तो सुनाई नहीं पड़ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, ये नशे में घूम रहे हैं सर अभी भी. उनका रुको, वेट करो, 1 साल तक होने तो इनको. अभी 1 साल 1.5 साल बाद क्या है कि अब बच्चे वो बहुत ज्यादा फास्ट लर्नर बन गए हैं. मतलब संथाल कम्युनिटी जिनकी की लैंग्वेज अलग है, संथाली है, वो बच्चे हिंदी में इनसे बात कर रहे हैं. तो ये अचीवमेंट हमारे लिए है. Wow, that's nice. ये जो सब करते हैं ना, I'm sure विलेज का जो लोग हैं उनकी तरफ से कुछ चैलेंजेस आया, जैसे बड़े लोग होते हैं ना वहाँ पे. बिल्कुल वो आज भी चैलेंज करते हैं. वो आज भी चैलेंज करते हैं कि तुम किनको पढ़ाने जा रहे हो, तुम बेकार में. हमारे यहाँ कहावत है, गोईठा में घी सुखाना, मतलब कि वेस्टेज कर रहे हो अपने नॉलेज को, अपने पावर को. बोलते हैं उससे अच्छा तुम मेरे बच्चों को पढ़ा दो, तुमको 5,000 मंथली देंगे, क्योंकि वो जानते हैं हम किस तरह पढ़ाते हैं. बोलता है कि ये गरीब नहीं है, तुमको लगता है. मुझे पता है ये गरीब है, आई नो वेरी वेल. तो उनको ये लग रहा है कि उनको लग रहा है कि अगर ये पढ़ जाएंगे तो हमारी चाकरी कौन करेगा, हमारे यहाँ काम कौन करने आएगा, फिर तो हमारा वैल्यू खत्म हो जाएगा. क्योंकि मेरा गांव भी यही है, तो लोग हमसे उतना उलझते नहीं है. बोलता है ये अपने गांव का लड़का है, आप कैसे इसको करें. अगर मेरे जगह कोई और होता ना, तो उनको तो ये भगा के रेडी हो जाते, पहले ही वो आउट करते गांव से, भाई तुम जाओ यहाँ से. I know that this shows that how strong, committed, and bold you are, to continue with your development work. Yes, thank you. Yeah. And back home, how was your parents have realized and seen the kind of work that you're doing? Has their thought process or perspectives changed now? Yes, they are totally changed, because that time when I was started, nobody know me.
They are all people saying they are going to mad. Now the people saying they are doing something good. They are Very doing nice. something big. Because in Yes. the Corona time, we just distributed the 1,000 ration kit, lunch with 300 kids every day last 3 months. They are saying they have the good approach. And recently, I just Oh, organized the eye camp. Yes. Then that's in had 300 patients coming for check about their visualization, and 10 लोगों को मैंने मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी करवाया अभी 5 दिन पहले ही। तो उनको लग रहा है कि नहीं यार, अभी विकास का अप्रोच ज्यादा हो गया है और बढ़िया काम कर रहा है, इसका मतलब ये है। that's nice. And you also mentioned that your wife also helps you in this Yes. journey of your development work or with your NGO. Tell me a little more about your wife and the work that she does. एक्चुअली whenever मैं जहां भी खड़ा हूँ आज अपने परिवार और अपनी पत्नी के कारण हूँ, क्योंकि when I was started I have no earning money, approx 3,000 per month I am earning. That time my wife is saying कि okay, whatever तो आप जितना कमा रहे हो मैं उससे काम चलाऊंगी. They are not demanding anything कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. जनरली क्योंकि मेरी शादी उस समय नई नई हुई थी, तो जब नई नई लड़कियां आती हैं तो वो डिमांड करती है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बट शी इज नॉट डिमांडिंग एनीथिंग एंड शी इज ब्लाइंडली सपोर्ट मी कि आप जो कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो. मैं कब मैं मेरा ये था, मैं जब घर से सुबह निकला 7 बजे तो मेरे पास मैं कब लौटूंगा ये मुझे नहीं पता होता था. तो मेरे पास पूछती थी घर कब आओगे, मतलब मुझे पता नहीं कब घर आऊंगा. सी नॉट कंप्लेनिंग एनी सिंगल डे कि तुम इतना लेट क्यों आए, तुम किससे बात करते हो, तुम कहाँ जाते हो. ई नॉट आस्किंग एनीथिंग, बस आस्किंग कि कहाँ गए थे और किसके साथ मिले थे, बस दैट्स वाई. अभी नाउ अभी रिसेंटली उसका जॉब लग गया फिर आईसीडीएस में, तो फिर मैं उसके पैसे से ही अपना घर चलाने लगा. तो इवन सी नॉट आस्किंग कि क्यों तुम मेरे पैसे क्यों खर्च करते हो, बिकॉज दे आर अर्निंग 20,000 रुपीज, दे आर नॉट आस्किंग कि तुम मेरे पैसे क्यों खर्च कर रहे हो, तुम अपना काम करो कुछ. बट दे नो ओके यू आर डूइंग द गुड वर्क, नॉट वरी, हमारे पास ये लौट के कभी कभी आएगा. तो ड्यू टू माई वर्क दे आर गेटिंग जॉब. मतलब इसके कह सकते हैं कि ईश्वर की कृपा से उन्हें काम मिल गया फिर, तो भी फिर हमारा घर चल रहा है ठीक ठाक से. That's really nice. And you know, Vikas ji, when I was seeing your work, okay, I was actually, you know, what attracted me personally was, you know, that some children in faraway, some village, you know, that you're doing work. But after knowing, because, you know, right, this is the length that we are speaking all these days, our conversations was the bits and pieces. And today, for whatever you have shared, it's really, really inspiring, and great respect to you, great respect. And, you know, also, you know, when you do some kind of development work, gives you immense satisfaction personally, yes, right? Yes. Yeah, that's why I'm doing. And that's why I'm doing. Yes, I maybe I might not be doing, but I know what it takes and how satisfying it is. Maybe for me also to start this change makers is I would want to bring out these stories. Really need the grassroots level peoples. Really need the grassroots level. You know, so I know how for me also it's so satisfying to bring in these kind of stories and tell these stories to the world. Maybe you might be sitting far away, but that's my what is this kind of contribution or a humble effort to bring in the stories. But what has, through this journey of yours, through this Pahal Ek Nayi Soch, what has been your personal learnings? My personal learning is more humble, more trust. Because without humbleness and trust, you cannot do anything. And whenever you behave like humble and trust, God give to back. In my personal learning. Yes. And we have now come to the kind of a last segment, which is called the signature fast 5 round, where I will be asking you some 5 questions, and yes, then yes, you can. Yeah, you know, this is fun. This is what I do in the end. Okay, so can we start? Can we start this one? It is called a rapid fire round, which is my signature round. Yes. The first one. What is the best thing about your village? Best thing is my kids. Nice. What does your work mean to you? Sorry, what does your work mean to you? Meet every day with kids.
एक दिन में नहीं मिलूंगा मुझे चैन नहीं आती है. Nice. और आपका लास्ट हॉलिडे कब था? लास्ट हॉलिडे मेरा पर्सनली फैमिली के साथ था ही नहीं. Last holiday was last 1 or 2 in year when I was going to my wife homes. Okay. One word for your wife. She is superwoman for me. Wow, that's really nice. And the last movie you watched? Last movie. My wife, when I was married in the 2016, called which Shahrukh Khan and Katrina Kaif and Anushka Sharma. Call movie Jab Tak Hai Jahan or something. Okay, okay. That was my last movie in 2016. The Hey. movie Cineplex. Thank you so much. One of the genuine past 5 rounds I have ever done. But this is so beautifully you have taken this. Now we come to the end of the super inspiring conversation with Vikas ji away from the forest. I thank you, Vikas ji, for sharing this beautiful journey with us and inspiring us, all of us. And before I let you go, I would want you to share your social media handles and the number that people can reach out if they would want to contribute in any way. Yes, they can contribute directly our account like Pahal Ek Nayi Soch, and I just share the account number, and they can share the UPI 9871782754. Yeah, and your social media handles if they would want to, can I put that also up? Yeah, Pahal Ek Nayi Soch on Twitter, on LinkedIn, on Facebook, on YouTube. Nice. Yes. On Instagram, same. Okay. And my humble appeal is for all the people who are watching out, check out their website, check out their social pages. It is adorable to see these tiny little kids and the commendable contribution that Vikas ji is doing for the future generation of his own village. And you can contribute in whatever way possible, not necessarily it has to be money, it could be any little things. You can reach out, and the kind of asks what Vikaji has is doable. He is not looking at great monies or anything. It's the little things that you can contribute, be it stationery, or it could be the tiniest little things that he is requesting for, and see what is that you can support him. And with this note, I say goodbye, and we will come back with yet another inspiring story. And for now, we say bye.